फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर and it has been a brilliant day for India. They have taken a lead over 300. यशस्वी जायसवाल ने 100 कर दिया है. बैक स्पैज्म लग रहा है, बैक में थोड़ा सा उनके इशू लग रहा था, इसलिए ही गॉट रिटायर्ड हर्ट और वो पवेलियन वापस चले गए थे. बट शुभमन गिल ने भी एक 50 लगा दिया. रजत पाटीदार अगेन ही गॉट आउट वेरी चीपली और शुभमन गिल और कुलदीप यादव अनबीटन है. वेल, टू टॉक मोर अबाउट today's play, I have with me Sahil Malhotra from Rajkot, Tao Sisby and Jamie Alder. Welcome to Cricket Next, everyone. Good evening. And Sahil, starting with Yashasvi Jaiswal, what a knock. I mean, starting slowly, apna time liya, got his eye, and then still had 5 sixes in that knock so far. I think let's move back a little. Yashasvi se pehle, let's talk about what the bowlers did today, because we have had sessions in this test match, in the test series, where India have dominated, but this probably bang in the middle of the series, third test, teesra din, where India have completely dominated the day. It hasn't happened in the series in the past, and this was one day, right from start till the end, there was not a single moment where England looked in the game. Chahe wo bowling plans ki baat ho, the way they bowled, they were a man down, and they needed a very special effort with the ball today, because we knew how England are going to come hard at them, but the way they kind of tied Ben Duckett initially, then Ben Stokes, then Ben Foakes, एंड जो रूट तो अब मेरे को लग रहा है वॉकिंग विकेट बन गया है. वो क्या कर रहा है, मतलब 10-11 हजार रन टेस्ट बनाने के बाद अभी क्या कॉमेडी कर रहे हो आफ्टर एवरी टेस्ट मैच. सो अगेन, मिडिल ऑर्डर वाज ऑलवेज द वीक लिंक फॉर इंग्लैंड. दे हैवंट बीन स्कोरिंग रन्स. जॉनी बेस्टो, जो रूट, अगेन दे हैवंट बीन स्कोरिंग द रन्स, बट क्रेडिट टू इंडिया है, द वे फॉर अ चेंज रोहित लेड द साइड टुडे. बट अब मैं इतना उसको अप्रिशिएट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये आपको दिख रहा था कि कल जो गलतियां हुई है उसका आज सुधार किया गया है. It was England who weren't better prepared to kind of counter the kind of little changes India made or little changes Kuldeep made with his lines. थोड़ा wide गया, sweep shot को picture से हटाया, field placement थोड़ी better हुई, तो England थोड़ा सा surprise हुआ आज India के tactics से. और morning में जिस तरीके से इनको tie down करा, that first hour when drinks were taken, Bumrah and Kuldeep bowled non-stop. After that, Siraj bowled with Kuldeep non-stop. So Kuldeep effectively bowled through the morning session except those last 2 overs जिसमें जडेजा को ट्राई किया गया था for one last over before lunch. So first, before Jaiswal, I think it's better we talk about the bowlers first, because they were your real heroes today. वरना इंग्लैंड अगर आपके टोटल के पास आ जाती, so India mentally बहुत drain हो जाता, because they are a bowler short and they are their number one bowler, the most experienced bowler, a bowler who you need when there are so many left-handers in the opposition. He's no longer available for this test match. That's the latest which we are hearing. So अगर वो नहीं है, so उस लिहाज से जो bowlers ने करा है, brave hearted effort, lion hearted effort, full marks to them for being relentless, for being very accurate and keeping baseball in check. और वो होता है ना, एक दिन आता है जहाँ इंडिया दिखाती है कि बॉस यहाँ के दादा हम ही है. वो आज दिन आया और बहुत अच्छा लगा स्टार्ट से एंड तक जो इंडिया ने with the bat, with the ball किया. Very good. Yeah. Jamie, your thoughts about okay, first with the bowling, with the way India bowled, वो plan दिखा, रोहित की कैप्टेंसी थोड़ी बेटर दिखी आज. I was really happy to see that kind of a field setting and everything. उसके बाद यशस्वी जायसवाल once again showing कि एक बॉस एक इनिंग खराब होती है तो मैं सीधा सैकड़ा लगा के इसको पूरा करूंगा. He's still unbeaten at 104. Oh, absolutely. Look, this was कल जो हालत थी इस इंडियन टीम की, this was, I mean, it would be an understatement to say that this was going to be a very important day, not for the match, but for the series. जैसे कि मैंने अभी एक और शो में कहा था, India have won up till now the most important day of this test series. This was the day which potentially could have been the difference between England being 4-1 and India being 4-1. Time बहुत है. Time क्या है यार? सौम्या 2 टेस्ट मैच बाकी हैं. But with even before we come to the 11:04 PM update के अश्विन नहीं है, इस टीम के धागे ऐसे खुल चुके थे. We've discussed that, but for the sake of putting emphasis on what Sahil has said and what I'm going to say and what you guys are going to also add on, this could have been the day from hell for this Indian team. Rohit, clueless. One of the fast bowlers was holding his thigh. There's no Ashwin. Kuldeep has gone for 7. 35 overs में 207 2.
Ben Duckett batting like $1,000,000. Already used, that was being called the best England innings ever. Whatever. This could have been a disaster day. और आसार पूरे थे कि भाई ये खराब दिन रहेगा. Rohit was lost. Rohit was कुछ shell shock करो, whatever you want. Rohit was clueless. And like Sahil said, brilliant Jaiswal. But जो इन लोगों ने इनको 207 पे 2 से 319 पे ऑल आउट किया ना, with a massive dollop of help from Joe Root's brain fade moment. This is not just ensured कि इंडिया ये मैच नहीं हार सकती, but this is potentially swung the series around, you know, because the threat was so bad भैया कि, and we discussed this in the tea break show कि भाई it's hats off to Siraj, to Kuldeep. Kuldeep opened the gates in the morning. Siraj smashed those gates down. Brilliant innings from Jaiswal. I mean, we'll talk about him, but put it all together, and to my mind, you've had the most important day of this series. Duckett 245, 250 marta, Joe Root marta. This could have been 600, you know. So they've really, I mean, like we discussed, hats off to Rohit. But again, did it actually take 133 off 18 balls to finally realize कि भैया sweep shot रोक दो? Hats off to Rohit, but it's taken so long for him to get there. Let's hope it proves a watershed moment for him in his Test captaincy. Yeah, चलिए आज थोड़ा सा उनको ये चीज का क्रेडिट दे देते हैं. कोई बात नहीं, रन्स का कोई एक दिन है, अच्छी बात है, but let's hope it stays. That's my point. So मैं just quickly adding before Taus bhai starts. I think जो Jamie ने point बोला ना कि it took like so many runs to figure the sweep shot out. That is the real problem in Rohit's captaincy right now. वो जाता है अपने होटल रूम में, probably change room में 3 एनालिस्ट साथ बैठते हैं, bowling coach बैठते हैं. That's when you analyze and make the second plan. For me, the problem is that is not happening when it's actually happening in the middle. That's how you react. मतलब आप देख रहे हो आपके सामने क्या हो रहा है, थोड़ा proactiveness अगर वो फील्ड पे दिखेगा ना, planning wise no doubt he's a very meticulous planner. He'll plan opposition's batters, but Test cricket and especially the way England play, you need to do things on the job. You just can't wait for a day's play to get over and then react and do a postmortem with your coaches and everyone. Like थोड़ा proactive होगा तो better होगा. बट ताउस भाई आज फिर भी ठीक है. आज जो हुआ, जो फील्ड पे करा, जो बॉलिंग चेंजेस या जिस तरीके से बॉलर्स को यूज अप करा, फील्ड प्लेसमेंट्स करी, वो कहीं ना कहीं आ गया है. अब उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है वो प्लान को. तो आज क्रिटिसाइज करने का कोई फायदा नहीं है. व्हाट डू यू से? नहीं, तारीफ कर रहे हैं लोग, क्रिटिसाइज कहाँ कर रहे हैं. आज के दिन उनको स्पेयर कर देना चाहिए और लोग स्पेयर ही कर दिए हैं. बिकॉज नहीं, वी हैव सीन ओवर द टाइम. और क्रिटिसाइज ऐसे नहीं कि खाली लोग ऐसे ही लेके बैठे हुए, भर के बैठे हैं कि यार एक जब मौका मिले लेके अटैक करने लगे. See, I mean, whatever you see on the wicket, whatever you see on TV, tablet, platform, phone, आप उसका रिएक्शन रहता है कि बेसिकली आपने कहाँ गलत किया, कहाँ सही किया, बाकी तो क्या. बाकी टुडे whatever Rohit does was good, and I'm sure like अगर वो सीखेंगे, and he's learning है. अभी कितनी कैप्टेंसी हुई है, अभी धीरे धीरे सीखेंगे. He was never a natural leader. आप देखेंगे वो एक, मैं हमेशा से कहता हूँ, लीडर जो होता है इनबॉर्न होता है, बॉर्न लीडर होता है. वो अपने आप वो एक शार्प ब्रेन होता है. और वो इज अ बिट यू नो, अगर उनकी बैटिंग की तरह ही लेट बैक है, थोड़ा लेट सोचते हैं, प्रोएक्टिव नहीं है और रिएक्टिव है. तो धीरे धीरे जब वो मैच्योर होते जा रहे हैं और अभी समझ में आते जा रहे हैं, कैप्टनसी में सिर्फ आपको डिपेंड नहीं होना है कि यार रिएक्ट नहीं करना है, आपको प्रोएक्टिव रहने का, आपको डिसीजन पहले लेने का है और हर बार एंटिसिपेट करना है कि अगली विकेट कैसे आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए. प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, बढ़िया है. और वो जोश आपको जो विराट में दिखता था या धोनी में वो जो स्ट्रीट स्मार्टनेस दिखती थी, वो यहाँ पर. सो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, सो वी शुड एंजॉय देयर फेज आल्सो. रोहित शर्मा हमने वो क्रिटिसाइज किया, अब ये फेज थोड़ा एंजॉय करना चाहिए कि दिस गाय इज ऑन द बॉल राइट नाउ and whatever he is touching is turning into goal so far, and especially in the kind of situation we have been last test match when there was no experience, this test match when we had no Ashwin. So luckily, I mean, things are going good for him, especially after that 2023 World Cup final loss. I hope that World Cup final में भी glitches थे, but then उनकी कप्तानी पे बहुत ये था, consistency मिल रही थी, runs मिल रहे थे, एक के बाद एक wins मिल रही थी, तो ज्यादा वो नहीं. but yeah, फिलहाल के लिए तो we should celebrate rather than criticize यार. Yeah. I'll just go back to the bowling bit. कुलदीप ने आज क्या चेंजेस करे? he looked very effective today. जो एक टर्न कराया, बेस्टो को जिस तरीके से कराया, बहुत परेशान किया. he was troubling the keeper as well. जुरेल को भी बहुत परेशान किया उन्होंने.
So what was the change in comparison to yesterday? Yesterday he was getting, he was being hit for runs. So yesterday was very straight. अगर आप जितना भी Ben Duckett का approach देखो with Kuldeep, like Kuldeep, I understand what he was trying to do yesterday, but yesterday there wasn't much purchase from the surface. आज surface और slow हुआ, और grip हुआ, और Kuldeep a tad wide गया. वो wide इसलिए गया because he didn't want him to sweep. There were field positions which were placed actually to kind of not allow him to get those boundary balls जो कल मिल रही थी. कल आपने देखा शॉर्ट फाइन था, वो इधर उधर मार के चौके ले रहा था. आज शुरू से ही रोहित ने पीछे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग लिया हुआ था, पॉइंट पीछे था कट के लिए. सो आज थोड़ा प्लानिंग बेटर था एंड कुलदीप मेड अ वेरी 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 स्मार्ट यूज ऑफ द गुगली. ही बोल्ड द मीन गुगली बट ही एंश्योर्ड कि सही टाइम पे, तभी वो ध्रुव जुरैल को भी सरप्राइज किया. क्योंकि उसका अब प्रॉब्लम क्या हुआ उसके अंदर, गुगली के साथ जो उसको एक्स्ट्रा टर्न और बाउंस मिल रहा था ना, दैट काइंड ऑफ केप्ट द बैट्समैन गेसिंग. क्योंकि नॉर्मल जो चाइनामैन वो फेंक रहा था, इट वाज गोइंग स्लो ऑफ द सरफेस, बट आई डोंट नो बिकॉज ऑफ द ग्रिप और द लैंडिंग पॉइंट और द रिलीज, समथिंग डिफरेंट वाज हैपनिंग विद द गुगली. वो बाउंस एक मतलब एक अलग सा बाइट निकल रहा था सरफेस से, एंड दैट इज व्हाट काइंड ऑफ वी सॉ व्हाट ही डिड विद जॉनी बेस्टो. Unfortunate the way Ben Duckett got out, but again he induced a fall shot, right? Because Ben Duckett post match post day presser में तो आके एकदम casually बोला कि I had no trouble facing him today, but he did not realize the fact that he was kept at under run a ball today. For a batsman who was going hammer and tongs yesterday, India kind of played with their head, and that is what you need to do with baseball. To have smart in out field. जब इनके चौके नहीं लगेंगे ना, ये थड़थड़ाएंगे. और आज बेन डकेट वो शॉट जो था, वो वाइड बॉल से चेस करा. ही वाज ट्राइंग टू डू समथिंग, ट्राइंग टू फोर्स अ शॉट थ्रू कवर्स बॉस, बिकॉज runs weren't coming. He wants to see the ball cross the boundary rope. That is what India didn't allow them to do this morning. That is what Kuldeep didn't allow them to this morning. Bumrah picked 1 wicket, but that spell was worth gold. He was going out after going, past the bat numerous times. 2 बार edge भी induce करा. मतलब वो बुमराह का कंट्रोल, और बुमराह 7 ओवर फेंक रहा था, तो सारे वर्कलोड क्रिटिक्स को तो चांटा पड़ेगा. चुपचाप बैठो, उसको खेलने दो टेस्ट क्रिकेट. Absolutely. Thank you for saying that. मतलब 7 ओवर वो फेंक रहा है, मतलब यार उसके अंदर कोई कह रहा है इतने ओवर कम कैसे फेंके. अरे टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है भाई, ग्रेड ए या ग्रेड ए प्लस कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, कोई हलवा नहीं है टेस्ट क्रिकेट. इतनी बड़ी कंट्री के अंदर इंडिया का वो लीडिंग फास्ट बॉलर है इस टाइम पे, नंबर 1 रैंक्ड आईसीसी टेस्ट बॉलर है. यू थिंक ही विल लीव एनीथिंग फॉर टेस्ट क्रिकेट? ही वोंट. So the way he bowled today, matlab just 1 wicket. Siraj picked like bucket loads of wickets, picked 4 wickets. But Bumrah's spell and Kuldeep's start is what, that first hour of play set the tone. That first hour before drinks set the tone. Okay, I'll just ask another question to you, Sahil. एक पूरा इनिंग निकला. ध्रुव जुरैल the keeper. What are your views till now? एक दो इधर उधर फंबल हुए, बट वो 22 से ठीक है, इतना कोई मेजर उससे नहीं इम्पैक्ट पड़ा, बट ही लुक डिसेंट. मैं और जेमी, हम लोग जेमी और मैं बात कर रहे थे, he looked decent. What are your views about his keeping? No, I was speaking to Deepdas Gupta before the day started. Okay. So I was speaking to him when breakfast was being served. So I actually wanted to understand from him keeping, because he has done that for years now, and he has been doing commentary. वो देख रहा है क्या हो रहा है, what techniques are required. So he told me a very clear thing, and which is I'm drawing a reference from what Rishabh Pant had said in a recent interview. ऋषभ पंत भी बोला कि मैं आईपीएल में कीपिंग करता हूँ, मैं एक हाथ के जहां हाथ डालता हूँ बॉल हाथ में आ जाती है. बट इंटरनेशनल स्टेज पे इट्स द मेंटल शिफ्ट व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट. ध्रुव जुरैल ने शायद जो आज करा है, आपको शायद अगले मैच में करता हुआ नहीं दिखेगा. क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ही विल ग्रो इन कॉन्फिडेंस. ही विल गेट अ फील ऑफ टेस्ट एरिना, ही विल गेट अ फील ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट. विकेट कीपिंग इज अ लॉट अबाउट फील than it is about टेक्निक, द मोटर मेमोरीज, द मसल स्किल्स एंड ऑल दोस थिंग्स. And Deepdas Gupta told me that he's very impressed with his movement and everything. He's not a very exaggerated mover. And he's not like taking too many steps on left or right. Fast bowlers के against he looked very very comfortable. And spin के against जो बॉल उसने कुलदीप की फंबल करी है, वो तो बैटर को आइडिया नहीं था यार. कुलदीप ने जब हाथ से छोड़ा होगा, उसको नहीं पता था क्या होगा. So give him the benefit of doubt there. Let him like get settled into test arena, because when KS Bharat came for the Australia series, I said that he's the cleanest keeper in the country right now. But even he fumbled. Ahmedabad pitch where nothing was happening. उमेश यादव या मोहम्मद शमी की बॉल के ऊपर उसने ख्वाजा का कैच छोड़ दिया था, रेगुलेशन कैच early in the Australian innings. So even that's the mental thing which needs to be sorted out. And the more games Dhruv Jurel plays, the better he will be as a keeper. He's very athletic, very young, only 23-year-old here. Yeah. And he'll only grow in confidence. But Deepdas Gupta told me that his technique is in order, his basics are correct. Keeping के अंदर it's very difficult to change basics because you have done those things
like why MS Dhoni did things the way he did, because that's how he did all his life. Now you can't change a Dhruv Jurel into a different keeper. जैसा वो करता हुआ आ रहा है, first impression it's good. The more games he plays, the better he'll become. यार, he looked And good today. Dhruv seems to be someone वो बहुत एक orthodox player होता है ना, batting में, you know, playing in the V, defending, you know, blocking the balls, keeping में proper, you know, so एक orthodox approach है कहीं ना कहीं, which is good in conditions में खेलने के लिए. अभी उसका सिर्फ एक मैच हुआ है. I was surprised the way he played because I've seen him play. I know what kind of range and game he has. Range, yeah. Just let him play 2 more games and you will see a different do ball. अब क्या बोलूं, ध्रुव बॉल, जू बॉल, जो भी बॉल चल रहा है, मतलब उसका भी आपको वर्जन दिखेगा यार. He can hit the ball a long way. बहुत अच्छा रेंज है उसका. But it's just like यार, पहला डेब्यू है, एक सरफराज का ऐसा बम्पर डेब्यू आ गया था, तो प्रेशर आप पे ऑलरेडी डेवलप हो जाता है. So give him the time and you will see a lot of range from him too. Okay, so we are talking about the batting bit, Jamie. Now it's time to talk about Rajat Patidar. I was having a chat I just texted Taus bhai 10 minutes pehle ki Rajat Patidar's wicket is on the cards. 10 minutes in the game and he was out. He wasn't looking that confident. What do you have to say? It's surprising because there's nothing in this wicket. It's going to be as good for batting. In fact, I was noticing, has it actually got flatter the way this match has gone? I'm actually wondering. Batting. I mean, हमने डिस्कस किया है, हमने कल डिस्कस किया, आज भी इसका जिक्र किया था when we're talking about what should India do in the final session, and I said run बनाए, but he shouldn't get out the way he did. Now, I mean, all said and done, I think he's bagged the pair for this match. He's done himself no favors. because यार गेम प्ले मुझे अच्छा लगा उसका. He's ticked every single box to get here. He's had to wait. I mean, okay, he's not done what Sarfaraz did, but I would like to see him get another chance. But unfortunately, अगर KL Rahul आता है, तो somebody has to make way. And we've discussed this, यार. Gill, Iyer, Patidar, इनके ऊपर बहुत दबाव था. This is before we knew that KL Rahul was not going to get ruled out. We said, एक बंदे को तो बाहर करना पड़ेगा. And Iyer was not scoring runs. Patidar ने कुछ बड़ा तो नहीं उखाड़ा पहले मैच में, but he did look good in getting that 27, if I'm not mistaken. And then Gill scored 100. Now Gill is set for another 100. तो इतना दबाव है, इतना fight है to stay in this 11. Unfortunately, if KL Rahul does come back, Patidar will have to make way. If KL Rahul does not come back, just because of the reward he should get, I think Patidar should be given one more chance. But yeah, when you fail twice on a flat track, सवाल तो उठेंगे भाई, जायज है. True. Taus bhai, your views on this kind of a dismissal again. You know, इतना uncertain नहीं हो सकते यार 2 बार अब. जिस तरीके से आउट हुए हैं दोनों पर, दोनों अनफॉर्चुनेट डिसमिसल थे. आई मीन ग्रेट डिलीवरीज नहीं थी. आई मीन करेक्ट. अगर वो डिलीवरीज मतलब ऐसा होता कि यार अनप्लेएबल एंड देन सडनली ही वाज क्लूलेस, यहाँ पर मिस टाइम शॉट्स एंड सडनली लीडिंग एज, आप कहाँ से कहाँ खेलने जा रहे हो. इट्स नॉट दैट ही इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर द फर्स्ट टाइम, या कोई गली क्रिकेट मैच खेलते आ रहे हो और सडनली उनको कोई टैलेंट स्काउट ने टैलेंट देखा और टेस्ट क्रिकेट में डाल दिया. ही नोज यार हाउ टू प्ले, how to score runs. But ये unfortunate dismissal, I would say, back to back. और ऐसे टाइम पे आना था when लोग शोर मचा रहे, शुभमन गिल सेंचुरी बना रहा, सरफराज ने अपना नाम बना लिया और यशस्वी जायसवाल आके मतलब he's turning into a superstar. So obviously these kind of dismissal, unfortunate dismissal, look very meek and very soft especially on this kind of a wicket. Crazy, he must be like kicking himself. अभी ड्रेसिंग रूम में घर जाते आते वो किसी से बात भी नहीं करेंगे, बस में चुपचाप बैठ के अकेले वो करते रहेंगे, क्योंकि द काइंड ऑफ कैरेक्टर राइट नाउ आई एम सीइंग हिम, ही इज अ साइलेंट कैरेक्टर लग रहा है. ऐसा कुछ शोर मचाने वाला बंदा लगता नहीं, या यू नो दैट एनिमेटेड गाय अग्रेशन के साथ वो बंदा दिखता नहीं. ही इज अ स्वीट टाइमर ऑफ द बॉल. मजा आता है अगर वो फ्लो में रहता है, जो हमने आईपीएल में देखा है, जो हमने लास्ट 2 इनिंग्स में देखा है, 30 जो बना है उसमें. और दो earlier two innings were in Vizag, which was a bit difficult wicket to bat on, and the way he was playing, he looked confident. But ये match में I think it's pure misfortune, destiny. He could have done some favor by being a bit attentive, by reacting in a very different manner. He could have played straight bat instead of hurrying up, trying to make a shot out of. He was trying to make a shot out of nothing. I mean, अगर आप थोड़ा बैकफुट पे स्ट्रेट, अब टिपिकल स्ट्रेट बैट खेलते ना, it boils down to technique also, by the way.
स्ट्रेट बैट खेलते आप मिडिल पे ट्राई करते ना कोशिश करने की, तो इधर उधर नहीं जाता, और दोनों डिसमिसल आपने देखे लीडिंग एज या फालतू शॉट खेलने में चले गए। सो वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट यार, आई डोंट नो व्हाट टू से आफ्टर दिस। उनको चांस भी नहीं मिलेगा यार अगला मैच में, शुभमन ये आगे थे राउंड, वेरी अनफॉर्चुनेट। Rahul Agar, KL Agar, yeah. Okay, I'll quickly take a comment from you, Sahil, then you can leave. कल जो डे 4 पे इंडियन बैटिंग उतरेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जायसवाल नहीं आते अभी फिट नहीं होते, व्हाट शुड बी द प्लान? सेकंड, डू यू एक्सपेक्ट फायरवर्क्स फ्रॉम समवन लाइक सरफराज जिस तरीके से पिच अप खेल रहा है, एंड आल्सो ध्रुव जुरेल? Absolutely, you need that. Yaar. You just can't bat into a shell. We know how it kind of backfired. आप फर्स्ट इनिंग में देखो, हमारा जो पहला दिन था बैटिंग का, हमने बहुत डोमिनेट करा, बट सेकंड डे फॉर नो रीजन ध्रुव जुरेल एंड रविचंद्रन अश्विन went into a shell in the morning session, and we left 60-70 runs extra there. Otherwise this could have well been game set and match before India even walked out to bat. अगर वो फर्स्ट इनिंग्स के अंदर 50 रन फालतू लग जाते, अब वो नहीं हुआ। यशस्वी का आई होप इट्स नॉट अ serious concern, because he was out on the, we were discussing before the show started, he was out on the field for like nearly 90 overs today before he like retired out. वो fielding कर रहे थे उससे पहले, फिर immediately उसके बाद batting करने आए। It's not that hot, so I think it's not back मतलब क्रैम्प तो नहीं किया, कुछ बैक स्पैज्म ही हुआ लग रहा है मेरे को, क्योंकि क्रैम्प के लिए आपको गर्मी चाहिए, और यहाँ पे आप डिहाइड्रेट नहीं हो सकते क्योंकि गर्मी इतना नहीं है। The weather is very pleasant for test cricket, so I hope it's like a minor back spasm and he wakes up fresh, wakes up well. The masseurs and the physios would have done their job by now. And Siraj didn't have an idea. We asked him at the post-day presser. He didn't have an idea because he himself was taking a massage when Jaiswal was batting. So the approach is very simple. Yeah, just do what you have been doing so far. Just don't try to do anything different. मतलब कोई अलग सा कोई किसी के कान में आके कुछ बोल ना दे, विक्रम राठौर या राहुल द्रविड़, जो ये कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। And the players probably know better what's happening in the middle than the coaches sitting outside. अभी इतना भी मेडल मत करना, जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एंड सरफराज इज गोइंग टू बैट द वे ही नोज, मतलब सरफराज को आप कुछ नहीं बोल सकते। वो 66 बॉल में 62 किया, उसको जो बॉल दिखेगी वो मारेगा, वो अभी भी मारेगा। और हार्टली और रेहान अहमद आपको वैसी बॉल देंगे, और जो रूट है भाई वो नेथन लायन नहीं है, वो 6 में से 4 बॉल देगा मारने वाली। एक टर्न होगी उसकी और एक हल्की सी टर्न होगी, तो बस उन 2 बॉल के लिए बचना है, 4 पे तो आपको स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी देगा। सो जस्ट गो आउट देयर, लाइक take it session by session, hour by hour, as the old timers say. पहले कल ड्रिंक्स तक बैटिंग करो, don't lose a wicket, ensure कुलदीप kind of hangs around for a long time, ताकि अगर थोड़ा moisture है भी तो कुलदीप kind of handles that moisture before Jaiswal comes back or Sarfaraz walks out to bat, and then like 150-200 more runs, make England bat in the final session towards the end, probably if you have wickets in hand till then, क्योंकि कुछ भी हो ये बेसबॉल तो डॉट बॉल नहीं खेलने वाला ना, और आपको 70-80 ओवर ही चाहिए रिजल्ट लेने के लिए। तो कल के 90 और परसों के 90 और कल के 10-15 लगा लो, 100 ओवर दो, 500-550 का टारगेट दो, बोलो जा बेटा मार, फिर मजा आएगा ना टेस्ट क्रिकेट देखने में। Anything below that is risky in your opinion? No, anything under 500? It's not risky. England are under pressure right now because the pitch, 4th innings pitch, when it turns, you haven't seen baseball on turning tracks when they're chasing. वो अभी तक उसका कोई सैंपल साइज ही नहीं है ना, क्योंकि वो पाकिस्तान में रोड में बैटिंग करी, एशेस के अंदर घर पे बैटिंग करी, वो अलग पिचेस हैं। ये 4th इनिंग विकेट विल बी वेरी डिफरेंट। और मैं तो कह रहा हूँ, अभी सिराज बोला कि फ्लैट है, स्लो है, जो 4-5 बॉल आपको टर्न होते हुए दिखी, जो हार्टली ने जायसवाल को करा, रूट ने करा, जो फर्स्ट स्लिप ने पकड़ी, तो कुछ हरकत होनी शुरू हो गई है। तो कल दोपहर तक ये और टूटेगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 550-600 चाहिए ही चाहिए। इंग्लैंड तो 350 बनाना भी स्ट्रगल करेगा यार, बट जस्ट बी वेरी सेफ विद देम बिकॉज दे आर अ फ्रीक टीम, दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो एक इंश्योरेंस लेके जाओ, गिव योर बॉलर सम रेस्ट आल्सो, क्योंकि आज बहुत पंप से बॉल डाला है, उनको रेस्ट अलाउ करो। और कल 3rd सेशन के अंदर बोलो इनको, आओ अब दिखाओ बेन डकेट, कहाँ बैटिंग करोगे आप, फिर मजा भी आएगा ना। हमारे लिए मजा आएगा यार कॉन्टेस्ट देखने में, मतलब बेन डकेट गोइंग आफ्टर इट, क्रॉली गोइंग आफ्टर इट, रूट स्टिल स्टैइंग द रिवर्स स्वीप ऑफ जसप्रीत बुमराह। इट्स गोइंग टू बी अ फैसिनेटिंग 4th इनिंग्स, क्योंकि इंग्लैंड पूरा पैसा वसूल अप्रोच दिखाने वाला है, मजा आने वाला है इस टेस्ट में। Well, Sal, thank you so much for your insights. We'll connect again with you. Thank you guys. Bye-bye. Thank you. Okay, let's quickly move on to the comments, please. मैं वो इंजरी के बारे में बोलना चाहूंगा कि ये बैक स्पैज्म ये वो होगा जो नॉर्मली हम लोग जो पार्ट टाइम ब्रेक लेके जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, और सडनली ये लचक जाती है हमारी, नस खिंच जाती है, लेके बैठ जाते हैं। तो भाई यू मस्ट बी नोइंग कि
तो ये डिस्पाइट भाई मैच खेल के आया पूरा, ये गया आज मेरा। थोड़ा डिस्पाइट थोड़ा बहुत गली क्रिकेट मैं भी खेला हूँ, थोड़ा बहुत गली, मेरे को पता है, मेरे को भी तो इंक्लूड करो। अरे इसलिए तो मैं सौम्या बोला। So despite having masseurs, despite warming up, despite having that professional setup, वो उनके बॉडी पे इतना लोड आ रहा है, आप सोचो तो वो बैक स्पैज्म, लोअर बैक में कितना फर्क पड़ रहा होगा, और जिस तरह से रन्स बना रहे मारते छोड़ रहे हैं, तो प्रेशर मुझे लगता है ग्राइंड बहुत होते होते आ रहा होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ ह्यूमन बॉडी, बहुत डेलिकेट होती है ना। एंड इट्स अ गुड डिसीजन टू वो चले गए, 15-20 मिनट रेस्ट करने का कोई फायदा था भी नहीं, कुछ मेजर होने का इशू हो सकता था। वेल, लेट्स मूव ऑन टू द कमेंट्स प्लीज। Right wing, amazing turnaround. Joe Root started this landslide. We have talked about it at length. Right wing. Next one, please. Next comment, please. Indrajit, terrific day feeling. Yashasvi Jaiswal, Dhruv, Sarfaraz, Shubman, Siraj and team made us proud amidst adversity. Yeah, Taus bhai, what are your thoughts? कहीं ना कहीं वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, जहाँ प्लेयर्स इंजर्ड थे, बाहर थे रीजंस की वजह से, एंड यंगस्टर्स स्टेप्ड अप। एब्सोल्युटली, और लास्ट मैच से ही देखिए ना, शुरुआत हो गई थी। लास्ट मैच में विराट कोहली भी नहीं थे, केएल राहुल भी नहीं थे, जडेजा कभी डाउटफुल था। तो आई मीन एडवर्सिटी में जो मजा है, जब आप बाउंस बैक करते हैं और जीतते हैं या एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस देते हैं, ऊपर नीचे होता है, रोलर कोस्टर होता है, सवाल उठते हैं। देयर आर अनफॉर्चुनेट डिसमिसल्स आल्सो, लाइक Patidar, but then the joy of Yashasvi Jaiswal or Shubman Gill coming up, with consistent performances, and then you see a Sarfaraz coming out with that, and Rohit Sharma captain leading. So in overall, ये बहुत ही जबरदस्त एक इंस्पायरिंग स्टोरी उठ के आती है। इट्स मोर ऑफ इंस्पायरिंग, एडवर्सिटी से जब आप उठ के आते हो और जीतते हो, तो एक अलग ही थ्रिल मिलता है, और ये इससे बड़ा लेसन और बिग हार्टेड परफॉर्मेंसेस नहीं हुआ, और खास करके इनके टाइम व्हेन यू हैव अ स्ट्रांग टीम अगेंस्ट यू। नेक्स्ट वन प्लीज। अंडरडॉग स्टोरी बहुत मजा आता है यार। Yeah. Sportsman, one of the best comebacks by Indian team in recent times. Rohit did not back down by Ashwin's exclusion from the match. Jimmy, quickly, your views. Absolutely. We discussed this in the tea break. We've discussed this now. This could have been a disaster day, but due to Rohit finally getting the sense of how to keep field placements. I mean, Joe Root ka wicket was the turning point. As Sahil was saying, I mean, Bumrah didn't get that wicket. That was a gift wicket, but the pressure before that led up to it. Bilkul. I mean, the fact that India has a lead of 322 instead of chasing 322 is just, it's full testament to how this was the biggest day of the series so far, like we discussed. True. Next one, please. Karthik Goyal, Jimmy sir, is in this baseball approach only Ben Stokes doesn't follow it. Faltu comment mat do bhai, that makes no sense. I'd like to understand more about the thinking behind these questions. Baseball is all Ben Stokes, और कोई नहीं उसमें। उज्जवल मौर्य, England just repeated their Lord's mistake. वहाँ लायन जेट था और यहाँ अश्विन out of the match. They were on top. नहीं सर, कुछ क्रेडिट इंडियन बॉलिंग को आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। They bowled really well, and all of them, not just one, all of them bowled really well. So yeah, it was a mix of Rohit's captaincy, India's bowling, और बहुत अच्छे से उस अप्रोच को उन्होंने रखा है वहाँ पर। Next one, please. Vyan Singh, yesterday Kuldeep was bowling with a new ball and Rohit did not give him any fielders in the deep. It was wrong decision by the captain to bowl him so early. Tausve, was it a wrong decision to bowl him so early? देखिए, वो क्या स्ट्रैटेजी थी रोहित की लाने की, इवन आई वाज सरप्राइज कि नए बॉल से आपने दे दिया डायरेक्ट, और वो भी व्हेन यू कांट ग्रिप व्हेन यू आर नॉट एबल टू ग्रिप द बॉल, खास करके जब आप ये हो रिस्ट स्पिनर हो। रिस्ट स्पिनर भी थोड़ा एडवांटेज रहता है, बट देन व्हेन द विकेट इज स्लो, अब आज सिराज ने क्या बोला, स्लो है, तो आपके पास समय रहता है। जो बैट्समैन जो सामने बेन डकेट है, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बैट्समैन है यार, ही इज एन अटैकिंग बैट्समैन, सो ही नोज वेयर द बॉल इज गोइंग टू बी पिच्ड और कहां, और रेस्ट स्पिनर ज्यादा गलती करते कंपेयर टू फिंगर स्पिनर्स। तो वो एक्यूरेसी आपको शुरुआत में नहीं मिलेगी, मगर फिंगर स्पिनर्स दे आर एक्यूरेट बिकॉज दे हैव कंट्रोल ओवर द बॉल। रेस्ट स्पिनर्स के पास नहीं है, तो गलती नहीं, यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजी थी तो शायद फेल हो गई, और कल की स्ट्रैटेजी अगर फेल हुई, आज में जो क्लिक हुई, उन्होंने ज्यादा ओवर्स किए वो, और स्पेशली शाम तक जब आप देखते हैं, जब व्हेन द सन इज सेटिंग,
द प्लेयर्स पूरा दिन करने के बाद, थकने के बाद दे आर टायर्ड, तो वो 100% या 150% जो अप्लाई करना चाहिए वो नहीं दे पाते। तो आपने आज अप्रोच नया सुबह में अलग ही देखा होगा कुलदीप से, ही वाज लुकिंग फ्रेश, क्योंकि आप सो के आते हो, एक फ्रेश माइंडसेट के साथ आते हो, तो दैट वाज अ बिट मिक्स रहेगा। तो Yeah. फील्ड सेटिंग्स के लेकर ये वो छोटे मोटे वो सब चलते हैं यार। आज जबरदस्त हो गई कैप्टेंसी, कल क्या था, आज तारीफ करे, कल के ऊपर गाली देंगे, तो ठीक है, लिबर्टी दीजिए थोड़ा। Okay, next one, please. We answered. Do any of the panelists remember a player leaving a test match midway for a personal reason? In my 27 years of watching cricket, this is the first time I have seen this. We don't really, shouldn't comment upon this because this must be a very, very urgent situation for Ashwin. That's why he's left the game midway. वरना ऐसा कोई नहीं चाहता. So yeah, let's just refrain from taking a dig at anyone's personal life. Next one, please. Jimmy sir, what was Rohit doing on that delivery that got him out? Almost full ball को कोई sweep मारता है क्या? सुबोध चौहान is asking. बताइए जेमी भाई. सुबोध पिछले 1.5 घंटे से ट्विटर उर्फ एक्स पे इसी बात को लेकर, देखिए सुबोध को रोहित शर्मा से और ये बोल रहा हूं क्योंकि ये रेगुलर व्यूअर है इस चैनल के, मुझे फॉलो करते हैं। ये सुबोध जो है ये पिछले 2-2.5 साल से ये मेरे चैनल पे आते हैं। सुबोध जानता हूं, पहले शुभमन गिल से इनको बहुत नफरत थी, आजकल इनके शिकार में रोहित शर्मा आ चुके हैं। He said on my handle के he does not deserve to play test cricket if he doesn't know how to bat for long periods, and he always disappoints, to which I threw back Rohit Sharma's last 15 test innings, home and away. I said, look, the problem is conversion. He doesn't know how to convert, but he has hundreds in the West Indies, hundreds against India. Yes, by his standards, he's disappointing, but you cannot say that he's not fit to play test cricket. मैं जानता था कि जब मैं ये शो का लिंक ट्वीट करूंगा तो सुबोध यहां भी आएगा उंगली करने के लिए। लुक, रोहित शर्मा ने, और मैंने जवाब भी दिया, मैंने कहा तुम थोड़ा टेस्ट क्रिकेट देखते तो तुमको मालूम होता सुबोध कि परसों के दिन बंदे ने 130 रन मारे, ठीक है। नो बैट्समैन स्कोर्स 100 ईच टाइम। आज का पर्सनली आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू शुड नॉट बी गेटिंग आउट टू जो रूट, बट जस्ट आई गेस सुबोध मिस्ड, और जब हम 3 लोग जुड़े थे टी ब्रेक पे, एंड तौस भाई ने कहा था कि राइट हैंड बैट्समैन को अराउंड द विकेट से ऑफ स्पिनर के सामने लालच चीज जो है वो खा जाती है। और तौस भाई, आई डिडंट से देन, पर आज के मैच में यही हुआ मेरे साथ, अराउंड द विकेट 2 विकेट लिए, इसी लालच में बंदे ने दिया। बट अगेन सुबोध, जस्ट टू आंसर द क्वेश्चन, it was a very bad shot, but can you be harsh on a guy who got 131 in the first innings? No. I'm not going to be. Yeah. I would rather have been harsh if he would have got out, playing an aerial one. ये तो ठीक है, तो proper shot खेलने गया। I get, like we discussed, you should not be getting out to Joe Root, but is he the first batsman to get out to Joe Root in this series? नहीं, Joe Root ने 7, 9, 8, 9, 10 विकेट लिए सीरीज में, तो उस लिहाज से सारे आउट हो सकते हैं। पिछले टोर पे पंजा खोल के गया था जो रूट। ये क्वेश्चन को आगे ले जाते हुए, हु इज अ बेटर स्वीपर इन द टीम, यशस्वी, रोहित या सरफराज? सरफराज आप लोग दोनों से सवाल है। सरफराज I will say Jaiswal, because he's done it a lot more times than I've seen. सरफराज ने किया, but एक मैच, एक पारी, this guy's been doing it for a long time, so yeah. I'll say Jaiswal. भी आज क्या convincing मारा यार, Vian Singh is echoing what you are saying, Jamie. क्योंकि स्वीप को बाउंड्री पार करना सेकंड टियर में बड़ी बात है, but I'm sure if we watch Sarfaraz long enough, it won't be long till we see him doing that. But consistently यार 5 के 5 छक्के ऐसे बंदे में कुछ बात है यार जायसवाल, मजा आ गया। True. Next one, please. Yeah, will England succeed in playing like Stokes' approach? He not like each one have its own approach. Sarat Chandra, I didn't really get your question. I feel he's saying the way Stokes starts the innings, probably he starts his. I mean, if you want Sarat Chandra, you want a very, very simple answer. The greatest innings of this era was Ben Stokes at Headingley 2019. He scored 2 of his first 66 balls, but he was there 100 and something not out. So if that's your approach, greatest innings of this generation, why not? It works, yeah. It works. Not just 100, taking the team
over the line after having a 100-run partnership विकेट थे almost ही with the last नहीं, one. बिल्कुल बिल्कुल, एंड द लास्ट गाय स्कोर्ड 2 रन्स, 2 कमाल runs की take it. पारी यार, अब बढ़िया है. If What Ash an is innings. not ready for the 4th test, whom we can see taking place in the 11, Aksar or Washington Sundar? Taus bhai, वॉशिंगटन सुंदर है. I would go with Washington Sundar. Yeah, I would go. That gives you a bet. वैरायटी लेके आता ना, वैरायटी लेके. हाँ. वी नो व्हाट Variety, yeah. वैरायटी लेके. Offie, no. Offie. No. I mean, forget the variety. You don't have an off spinner. You need an off spinner. Simple. And also, Simple I don't know बात. why. I don't know why. भाई Yeah, का बायस है, हम लोग का बायस है. Aksar, no. Aksar has scored a lot of runs with the bat recently, but I just feel Washi can be more, effective with the bat as well. I just feel that, उस जगह पे. Also, I just feel नहीं वो तो है, but then you're going to have 3 left arm spinners. ना, जरूरत नहीं है. Exactly. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वॉशिंगटन सुंदर कहीं भी अश्विन के आसपास हैं, but you need an off spinner. Yeah. Okay. Against Ben Duckett and Ben Stokes, यार. Correct, bhai. Correct. Okay. Before we wrap the session, Jamie, what are your expectations? जैसे मैंने साहिल भाई से पूछा कि कल अगर दो conditions है. If Jaiswal is fit, if Jaiswal is not fit, what should be India's approach going ahead for the 2 sessions probably? यार देखो, आपको मेरे हिसाब से आपको सिर्फ 180 रन बनाने हैं यहाँ से. 180 रन आप बनाओगे, आपके पास 500 है. अब 500 के बाद आप 525 मारो, 540 मारो, 544 मारो, इट्स ऑल द सेम. 500 दे दो. अब आपका अप्रोच क्या है? 180 रन तो यार आपको यहां से, अगर जायसवाल बैटिंग नहीं भी करता है, 180 रन इस पिच पर अगेंस्ट दिस सैगिंग, फ्लैगिंग, टायर्ड इंग्लैंड स्पिन अटैक, इट्स डूएबल. अगर आप कल 180 रन नहीं बना सकते हो, 8 विकेट नहीं, ये अश्विन नहीं आएंगे, आपके पास 7 विकेट है. 7 में जोड़ रहा हूं, आई थिंक, लुक, जायसवाल 23 साल का है. दिस इज द डे ऑफ मॉडर्न मेडिसिन. कल वो बैटिंग करने आएगा. वो द गाय इज डेस्परेट टू बैट. He's had to wait a long time, not as long as Sarfaraz, but I don't think he's यार 22-23 में क्या बैक स्पैज्म. आ जाओ यार, खेल लो, उसमें है जिगरा. आपको बस खड़े होकर रिवर्स स्वीप लगाने और आप लगा सकते हो. सो आई एम सेइंग इंडिया हैव 7 विकेट्स, नॉट 8, बिकॉज अश्विन बैटिंग नहीं करेगा. अगर 7 विकेट के साथ आप 180 रन नहीं बना सकते हो तो भाई रहने दो. इट्स 322 की लीड है यार, आपको कुछ नहीं करना है. The point is the approach. Like Sahil said, bat out time, stall बिछा दो, platform बिछा दो. सही बात है. You could do that, but you don't have to. We've discussed कि सरफराज आके चलो तोस भाई 10-12 बॉल देख लेगा लड़का, उसके बाद तो धमाके आने वाले ना उसके बैट से. Jurel, there's enough batting to get you 180. If you don't get 180, फिर तो भाई रहने दो. फिर I fully expect them to get 500. Like Sahil said, जाओ खेलो बेसबॉल, खेलो, बढ़िया खेलो. 4 सेशन है. बट आपको 500 आपको देने पड़ेंगे. साइकोलॉजिकल एडवांटेज इस बेसबॉल टीम के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है. कैन दे चेस 500? नो. Will they back themselves chasing 470? Absolutely. They got 380 against India 2 years ago. Psychologically 500 तक पहुंचो. 180, 178 run to be precise. यार क्यों नहीं हो सकता है? True. And obviously, you can go by session, no? 90 in one or probably 70 in one, and then just go for it in the second one, and then उसके बाद declare करके दे दो. या declare नहीं भी करो, जितने add on कर सकते हो करते जाओ. Just I'm saying that makes sense, but I'm saying bat again. अगर जायसवाल कल कुलदीप के विकेट के बाद बैटिंग करने आते हैं तो फिर ये मत सोचो, because he didn't think this way. He said, boss, मैं तो सूतूंगा, right? It depends कि कौन अगले विकेट के बाद आता है. If they send Jadeja, then I say fine, score 80 in a session, score 90. If Jaiswal walks out, yeah, you could be 130, 140 in one session. So play it for the batsman coming to the crease. But yes, to my mind, आपका target है 178 runs, ताकि आप 500 का target दे दें उनको. Yeah. Taus bhai, quickly your views on this, your thoughts. I want a 200 from this guy Yashasvi Jaiswal. I'm keeping it simple. 200. Shubman Gill 100, and that gives freedom to Sarfaraz to go out and enjoy his game. यार, no pressure at all. फिर 550 बन जाएगा. अब टी तक बैटिंग करो. बाकी तो because these guys England, I mean, they are unpredictable यार. वो madness की तरह डकेट का एक और 100 लग गया. बेन स्टोक सडनली लीन पैड से वापस आ गए फॉर्म में. जो रूट का जो रिवर्स स्वीप नहीं लगना था वो सडनली लगने लग गया. यू नेवर नो यार. So 500 run is a good target.
Yeah, but I'm just wondering this baseball approach, or as you mentioned, Jimmy, this England approach, Brendan McCullum and Ben Stokes approach has, forced us to think यार 500 तो कर देना चाहिए तभी बिल्कुल बचेगा. बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, उस रीस्केड्यूल्ड 5 टेस्ट मैच के अंदर यार टीम ने 300 क्या 378 का टारगेट दिया था यार. There was no business. I guess 387, हाँ, 378, ये ऐसा कुछ है. I think जो भी है, चलो लेट्स से 375 प्लस. यार ऐसा नहीं हारना चाहिए ना. तो जो वहां हो गया यहां हो सकता है, राइट? यस, वी कैन एक्सपेक्ट के बॉल कुछ हरकतें करेगी डे 5 पे, बट लेट्स से इट डजंट. This is the difference between 500 and 475. Can they chase 450 without Ashwin? Why not? But 500, it's a psychological advantage which it plays on the mind. I believe, यार 178 runs, Jeff हो जाएगा. अगर नहीं हुआ फिर तो भूल जाओ यार. True. Well, we just hope that India are able to post a mammoth total, और टोटल 2-2 यार खत्म करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उनको 2-4 सेशन बैटिंग करने के लिए और बुलाओ, चैलेंज करो 500 चेस करने के लिए. Well, thank you Jamie and Taus for joining me in this one. We'll connect again. We'll talk about this game again. Thank you. Bye bye. Good night. Thank you. Good night. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.